Good morning, students. As you can see in this lecture, we are going to continue with the topic on C tokens. As we all know, we have already completed certain tokens like keywords, identifiers, and strings. We have already completed these tokens in my last live sessions. Today, we are supposed to start with the next set of tokens, that is operators. We have already covered the constants also, right? We have covered identifiers, we have covered these constants, we have covered strings. Okay. We have also seen the examples of the ways of declaring a constant in a C program. So this was the program with an output. One was using const keyword, as you can see over here. In this program, we have already seen in last live session that how to create a constant using the const keyword. And the other way of declaring the constant was explained to you by using the hash defined preprocessor directive. And to differentiate, I've already told you that in hash defined directive method, you do not use an equal to sign between the macro name or a constant name and the value assigned to it. And this height is the name of the constant, which is also known as macro, technically in C programming. What are those? We'll deal in the forthcoming sessions. So अभी के लिए समझ लीजिए ये constant है जो कि hash define के through declared है और ये height की value है 100. But point to be noted over here is you do not use an equal to sign to assign a value. Whereas over here when you were assigning the value to a height constant, you used an equal to sign. In case of when you were declaring constant using const keyword. Second point is every constant declaration is terminated by a semicolon. जबकि hash define में you do not use the semicolons. Okay, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी constant definition के बाद semicolon नहीं लगा है. So these are the 2 points to be noted. Okay. And next, last topic in last session we discussed was strings. Strings are nothing, they are the character arrays terminated by a \0. So that is a string. Now, the topic for today's discussion is operators. Operators in C language. So when we talk about operators in C, operators are nothing but they are the symbols which are used to perform some logical and mathematical operations in a C program. They are known as C operators. C operators join individual constants and variables to form an expression. Now when we say expression, a plus b into 5, इसमें expression a plus b into 5 is an expression, जबकि a और b are variables and asterisk symbol is a operator and 5 over here in this expression is a constant. Okay, and I left out with you at this point types of operators. सिर्फ ये आपको table दिखाया था, so we just start from here. Arithmetic operators used to perform mathematical calculations like addition, subtraction, multiplication, division and modulus. कैसे use होते हैं अभी आगे discuss करेंगे in detail. Assignment operator used to assign the values to the variable equal to sign जो होता है. Relational operators used to compare the values greater than less than operators जो होते हैं, not equals to. Logical operators are used to perform logical operations, means अगर दो conditions को add करना है, ठीक है, adding करनी है या oring करनी है, तो we use logical operators, logical add, logical or and logical dot. 3 logical operators are there. Bitwise operators used to perform bit level operations. Bit level operations means they are going to perform all the operations assigned to them at bit level, that is in terms of zeros and one. तो अगर आप बोलते हैं कि 12 and 5, okay, 12 की एडिंग 5 से करनी है, तो उन दैट केस 12 को आप पहले कन्वर्ट करेंगे बिट्स में, बाइनरी नंबर में, 5 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, फिर उसके ऊपर ट्रूथ टेबल बनाएंगे और उस ट्रूथ टेबल का जो आउटपुट होगा दैट विल बी द आउटपुट ऑफ योर बिटवाइज ऑपरेटर 12 and 5. सिंगल एम्परसेंड होता है. लॉजिकल ऑपरेटर एंड और बिटवाइज एंड में डिफरेंस होता है, इसमें डबल एम्परसेंड साइन होता है, इसमें सिंगल एम्परसेंड साइन होता है. तो अभी आपको आगे डिटेल में वील डिस्कस. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कंडीशनल ऑपरेटर्स. ये टर्नरी ऑपरेटर आप देख रहे हैं ना, यूजुअली जितने ऑपरेटर्स आप यूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम कंडीशनल एंड इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बाकी सारे ऑपरेटर बाइनरी हैं. अभी तक आपने जितने भी ऑपरेटर्स यहाँ पे देखे
starting with arithmetic operator, relational operator, assignment operator, logical operator, bitwise operator. ये सारे operators are binary operators. तो एक तरह से operators का classification, children, is also done in this way: unary, binary, and ternary. We can classify these operators under three heads. Unary operators are those set of operators which have one operand, which work upon one operand basically. As I said, example of unary operator would be increment and decrement operator. When I write I plus plus, yeah, I write minus minus b. Okay, so minus minus या plus plus is a increment or decrement operator respectively, and they are operating on a single operand value, let's say I or b respectively. So when an operator works on an individual single operand, that operator is said to be a unary operator. When an operator works upon two operands, when I say a plus b, तो a and b the operands, जबकि plus is an operator, तो a plus b में जो plus है वो binary operator है, because binary operator need two operands to function. If I write if a is greater than b and a is greater than c, then print a is greatest. Okay, तो इसमें दो conditions है, a greater than b and a greater than c. तो अब आप a greater than b की अगर बात करें तो greater than sign is working upon two operands a and b. तो again the relational operators जितने भी होते हैं, they are all the category of binary operators. Two conditions being joined through an AND logical AND operator. If a is greater than b and a is greater than c. So this logical AND operator works upon two conditions. Okay, so again, logical operators are binary in nature. Same applies with bitwise operator. We write a greater than 5 means I am doing right shift operation where two operands are being worked upon, a and 5. So again, bitwise operators are binary operators. Jabki when we were talking about conditional operator, it takes three parameters, or rather three operands. Conditional operators work upon three operands. What are those? What is its example? I'll let you know when we move to that point. बस अभी के लिए समझ लीजिए, conditional operators work upon three operands, hence they are known as ternary. They fall in the category of ternary operator. So ternary operator is an operator which works upon three operands, right? So conditional operators return one value if condition is true and returns another value if the condition is false. Special operators में ये आ जाते हैं, ampersand address of operator होता है, asterisk pointer operator होता है, किसी variable को pointer type बनाने के लिए use होगा. Size of operator जो है वो हमें बताएगा कि what is the size, like memory occupation of this particular variable. Okay, how much memory has been consumed by a given variable. तो find out करने के लिए we make use of size of operator. Usually आपको दिखता function जैसा है, बहुत सारे बच्चे इसको function size of function बोलते हैं, but this is wrong. Size of operator है special category of operator. So this is how you classify operators. आपको theory paper में ये question हमेशा मिलता था. What are operators in C language? Give an elaborate classification of C operators. Now, when we talk about arithmetic, as I said, plus, minus, into, divide, ये उनके symbols आपको दिए हुए हैं और ये एक example दिया हुआ है. इस example में what I have done is I have declared two variables I and j with 3 and 7 values respectively, and k is the third variable जिसमें कि I'm going to assign the output like operation value. तो k is equals to I plus j and k की value print करेंगे तो output क्या आएगा? 10. 7 plus 3, 10 will be the output. Increment decrement operator, as I said, useful operators generally used to minimize the calculation. Plus plus x, x plus plus. जब आप ये करते हैं तो इसका मतलब होता है x is equals to x plus 1. Okay. और जबकि आप x minus minus या minus minus x करते हैं तो इसका मतलब होता है x is equals to x minus 1. Right. But there is a slight difference between plus plus and minus minus written before or after the operand. Okay. ये जब ऑपरेटर पहले लगता है तो ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है, और अगर आप x प्लस प्लस करते हैं तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है. प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर की जब हम बात करते हैं तो आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि फर्स्ट इंक्रीमेंट द वैल्यू एंड देन असाइन. तो x इज इक्वल टू x प्लस 1 इसमें भी होगा,
तो अगर हम प्लस प्लस एक्स करेंगे और एक्स की वैल्यू अगर 5 है तो प्लस प्लस एक्स में जो नेक्स्ट एक्स की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 6। ओके, तो एक्स में 6 आ जाएगा। जबकि अगर हम y इज इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स करेंगे तो y इज इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स करने से क्या होगा, इट इज गोइंग टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ x एंड ओनली देन इट इज गोइंग टू असाइन इट टू y। तो x और y दोनों में 6 होगा। और अगर हम करेंगे y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस, तो इक्वल टू की तरफ x पहले पड़ रहा है तो ये क्या करेगा, x की पुरानी वैल्यू y को असाइन कर देगा विच इज 5 और खुद को इंक्रीमेंट कर लेगा +1 से। तो अगर आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस करेंगे तो y में 5 आएगा, x में 6 हो जाएगा। और अगर आप y इज इक्वल टू प्लस प्लस एक्स करेंगे तो y और 6 x दोनों में 6 असाइन होगा। दिस इज व्हाट हैज बीन शोन टू यू ओवर हियर। सी a and b बोथ इक्वल टू 5, दोनों में 5 असाइन किया। ठीक, पोस्ट फिक्स मोड ऑफ फॉर अ प्रीफिक्स मोड ऑफ b, राइट। A में पोस्ट फिक्स ऑपरेटर यूज किया और B में प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज किया। अब अगर हम वैल्यू ये प्रिंट कराते हैं A माइनस माइनस और माइनस माइनस B, A के लिए पोस्ट फिक्स ऑपरेटर और B के लिए प्रीफिक्स ऑपरेटर, तो ये क्या प्रिंट करेगा आउटपुट, ये A माइनस माइनस है तो ये पहले प्रिंट करेगा बाद में डिक्रीमेंट करेगा। तो A की वैल्यू आप देख सकते हो 5 प्रिंट हुई, दोनों में 5 था जबकि। और जब आप माइनस माइनस बी प्रिंट करा रहे हो तो ये पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर प्रिंट करेगा। तो पहले इसने डिक्रीमेंट किया, बी की वैल्यू 1 से 4 हो गई और ये 4 आउटपुट आ गया। नेक्स्ट लाइन में जब आप ये फिर से करेंगे तो अभी ए की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट 5 हुई थी मगर वो हो 4 चुकी थी, तो इसलिए फिर से ये 4 करेगा और ये 3 आउटपुट आएगा। यू कैन सी 4 and 3 सेकेंड आउटपुट। थर्ड में ऐसा नहीं कि ए की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ए की वैल्यू भी 3 हो गई है। अब ये 3 प्रिंट करेगा और यहाँ पे 2 प्रिंट करेगा, क्यों, क्योंकि वो बाद में प्रिंट कर रहा है। फिर यहाँ पे वो 2 प्रिंट करेगा, यहाँ 1 प्रिंट करेगा, 2 1 and same way 0. So this is the output. Next is relational operator, as I said, greater than less than signs, and logical operators are there, that is double ampersand, double pipe sign and exclamation mark for logical not. Okay, now next coming on to bitwise operators. I'll do the programming and then it will be more clear to you in my live sessions. Bitwise अभी के लिए symbols देख लीजिए कितने होते हैं, bitwise right shift, left shift, ones complement and XOR and OR single होते हैं। ये काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, bitwise and और logical and में क्या डिफरेंस है। तो logical and is double ampersand sign जबकि bitwise and is single ampersand sign। और ये कैरेट क्या होता है, दिस इज bitwise XOR ऑपरेटर। गेट्स के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन आई विल बी गिविंग इट टू यू, एंड और XOR गेट का क्या ट्रुथ टेबल बनता है, कैसे होता है, आई विल टेल यू इन योर लाइव सेशन। अभी just theoretically we are discussing assignment operators. Assignment operators are also known as shorthand arithmetic operators. ये इतनी लंबी लिस्ट है, जैसे प्लस इक्वल्स टू माइनस, अगर हम a प्लस इक्वल्स टू 5 लिखते हैं तो मतलब a इज इक्वल्स टू a प्लस 5, b माइनस इक्वल्स टू 3 लिखते हैं तो b इज इक्वल्स टू b माइनस 3, दैट वे इट वर्क्स अपॉन, मतलब ये वैल्यू के भी काम करेगा प्लस असाइन भी करेगा। Coming on to conditional operators are ternary operators. ये conditional operator का symbol होता है, question mark and a colon sign. Okay, if I write an expression with this, you will see इसमें एक expression पहले होता है, फिर बाद में होता है, फिर इसके बाद में होता है। तो 3 operands use होते हैं, operand 1 question mark, operand 2 colon, operand 3. That way it works. And there are certain other categories of special operators, size of ampersand and this asterisk returns the size of the memory location, gives the address of a memory location and points to a particular variable, means pointer creation. So that's all for today. I hope the list of C operators is clear to all of you. I end my session by this. Thank you.